सर आप सभी लोग अंतरिक्ष के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो कि अंतरिक्ष के बहुत नजदीक में है। अरे बाप रे बाप। और ऐसा कहा जाता है कि जो आम ऑक्सीजन का लेवल होता है हमारे यहाँ पर, उससे 50% कम ऑक्सीजन लेवल है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस जगह का नाम है ला रिंकोनाडा। और बहुत अद्भुत जगह है। साथ ही में इस जगह पर सोना बहुत निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोग यहाँ पर रहते भी हैं, हाँ। अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, हाँ। और सोने की तलाश में मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत सी चीजें इसमें मैं चाहता हूँ ज्यादा आपको ना बताऊं। हाँ। एक बंदा है रूही सेनेट, अच्छा, जिसकी हम पहले भी कई वीडियोस देख चुके हैं। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तुर्की के रहने वाले हैं। हाँ। ये वहाँ गए हैं और वहाँ के बारे में काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाकर आए हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं हम इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा, जिस जगह आप मेरे को ये बता दो कि वहाँ 50% की ऑक्सीजन की कमी है, अगर कोई उतरने का मतलब अगर वहाँ उस जगह हो जाता है उसे बिजली मिल जाएगा होते हैं। तो सर ये जो आपने इतना सब कुछ बताया, सोना निकलता है वहाँ पर, तो लगता है लोग सोने की लालच में ही वहाँ जाते होंगे। हाँ यार, मेरे को तो ये जान के हैरानी हो रही है। हाँ। कि वो अंतरिक्ष के बहुत नजदीक है। हाँ। तो इसका मतलब ये लोग कितनी ऊंचाई होना चाहिए, उसकी तो ऊंचाई होगा, ज्यादा ऊंचाई होना चाहिए। हाँ यार, सब अब तो समझ नहीं हो जाएगा। अंतरिक्ष के पास ऐसी जगह आप तो लगाइए, देखते कितनी ऊंचाई है उसकी, लगाइए। La Rinconada, the closest inhabited place to the sky on Earth, where people are living above the clouds. At this extreme altitude of 5,100 meters or 16,700 feet, the atmosphere significantly thins, and the locals are living with only 50% of the usual oxygen levels. Their bodies have evolved to produce 2 times more blood cells than ours. On this barren land, not even a single tree can survive because of the low air pressure. This town in the Peruvian Andes is even 300 meters higher than Mont Blanc, the highest peak in the Alps of Europe. बाप रे बाप, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। ये देख कर बाबू मुझे ये समझ में आया कि कुदरत की कलाकारी देखो कैसी जगह मौजूद है कि ये देख कर कितनी हैरानी हो रही है मेरे को तो यार। वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के वातावरण के हिसाब से ढल चुके हैं वो लोग। Far from the modern world, it is a place where crime and danger are always nearby. People come to these harsh lands for only one reason: gold. About 50,000 people settled here among piles of trash, all dreaming of wealth. We are on the road to explore life in the world's highest settlement. वही बात आ गई ना। हाँ। एक सोना ऐसी जड़ है जो लोगों को वहाँ तक खींच रही है। बताओ आप, लालच बुरी बला। हाँ। क्या भैया? Give me 2, please. 2 oxygen. Climbing above 2,000 meters in a day can trigger altitude sickness for someone used to sea level. But as of now, we have already doubled that elevation level. Very deep. Headache, dizziness, and nausea are the first symptoms. मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही, वहाँ लोग रह कैसे रहे होंगे यार। और वो बाहर से आया, वो तो वहाँ रह ही नहीं पा रही है। उससे बदल ही नहीं हो रही उससे यार। हाँ। Followed by coughing, it may cause shortness of breath. Immediate help is crucial when rapidly progressing altitude sickness leads to fluid accumulation in the lungs. At high altitudes, the body loses about twice as much water through breathing, so it's important to keep hydrated. चाचा, अगर वहाँ चले गए ना आप, तो पानी बहुत ज्यादा पीना वहाँ। हाँ भैया। हाँ, और वहाँ थोड़ा संभल के रहना। बिल्कुल। हाँ। Look at the elevation here, friends. So that mountain is as high as that cloud. So we're gonna go above the clouds. अबे बादलों ऊपर भी है ना, कब से कितना ऊंचा होना चाहिए यार। Don't worry about us, we're fine. We're gonna inhale these as the altitude rises. Nothing happens to people from here. They have an adaptation to this situation. Atmosphere layer gets thinner and it makes it harder to inhale the oxygen. वहाँ के लोगों ने तो तरीका ढूंढ लिया, मगर दिक्कत उनकी है जो बाहर से आ रहे हैं। But we will get used to it. The place we're heading to is a mining town. Deadly chemicals like cyanide and mercury used in gold processing have contaminated the soil and agricultural water in the settlement. Before starting the journey, we also packed plenty of food and clean drinking water. We were born here. उनका कहना ये बोला कि यहाँ पानी साफ नहीं, पानी वो जहरीला।
और अगर अपन वहाँ जाओ ना तो अपना इंतजाम पहले ही कर लो वहाँ पे। करना पड़ा। हाँ, वो पानी की बाटले सबसे ज्यादा ले जाना, क्योंकि पानी के बगैर तो अपन रह ही नहीं सकते। We are adapted to this elevation. The normal oxygen level in blood should be between 95 and 100%. Below 80%, vital organs become negatively affected. अरे बाप रे बाप, अब उसका तो बहुत प्रोसीजर पे आई है यार, वो रात हो गई तो यार। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, वो क्या करे बेचारा उसमें यार। I'm trying to normalize my current 72% level with oxygen, but it's a temporary solution as we're going up higher every minute. बीच बीच में वो टंकी का ऑक्सीजन ले रहा है तो फिर वो सही आ रही है जरा। The town is literally surrounded by tons of waste stretching for miles. Nature has given place to piles of garbage. The moment we arrived, a sickening odor hit me suddenly. देखते हैं सालों ने कितना कचरा कर दिया यार। यार देख, कचरे का उन्होंने पहाड़े बना दिया। मुझे ये देख के याद आ गई, जहाँ एक जगह कचरा इकट्ठा नहीं होता, गाड़ी कचरा डालने की, वो जगह बना दी सालों। उसका वही तो मैं कह रही हूँ। We are at our hotel in La Rinconada. Our guide is setting up the oxygen tank for us. What is the name of this hotel? Cielo means sky. Use the oxygen tank for 5 minutes first, and after a little break. मतलब ये है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम कि आपको आराम करना है, उसका आपका जरूरी है। And another 5 minutes. You need time. Rest a little bit to adapt your body to this elevation. When I got out of the car, I felt dizzy. I was like going to fall. बेटा तेरे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए तो कोई चक्कर आ रहा है। Very normal. Crimes, especially stabbings and theft, are quite common here, because locals typically keep their cash and gold with them as there are no banks available. चोरी और लूटमार कितनी हो रही? वही तो है। We're teaming up with 2 police officers to keep us safe while we're filming. They are undercover police and they will follow us everywhere we go. यार साथ में पुलिस लगता है, अगर घूमना पड़ रही है तो ये सब दिक्कत वाला काम है यार। आपकी दिक्कत वाला काम है, वो तो सही। Marco directs us to coca leaves as he thinks it's a remedy to avoid getting altitude sickness, a traditional habit here. ये टोपा की पत्ती क्या होती है? अरे मेरे भाई, मेरे को क्या पता, कहीं तो गया नहीं। अब जब तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम? Coca leaves, sir. Coca leaves. I think they're consuming this for altitude sickness. They chew 3 or 4 leaves on one side of their mouth. These leaves, which are illegal in most countries, produce a kind of numbing effect that helps users relax. यार होना हो माशाल्लाह, मुझे तो यार गाने चली कोई फील लग रही है मेरे को। For almost everything. Maybe one of the police officers can carry this. We leave a busy and tiring day behind, and we will explore the town the next day. We are in the center of La Rinconada at sunrise. The police officers are by our side. The surroundings are full of local cafes, markets, and people. Even though I just woke up, my body feels dead tired, like it hasn't rested in days. ऊंचाई की और ऑक्सीजन की कमी से उसकी थकान नहीं उतार पा रही। Walking is hard with the dizziness and nausea. The dry air gives me a sore throat and chapped lips. As the night gave way to daylight, piles of garbage in the side streets became more visible. Even though it's summer and we are close to the tropics, the ground is frozen. In this place where the nighttime temperatures drop to minus 10 degrees Celsius. कहने को वहाँ गर्मी है, मगर अभी भी बर्फ कितनी जमी है और कोहरा देखो कितना ज्यादा। पूरा कितना फैला हुआ है। हाँ। People are living in metal shacks without electricity or heating. No kitchens or bathrooms in these houses, and thousands of people have to use the same public toilets and baths for their personal needs. इतने सारे लोग रह रहा और उनके घर में बाथरूम ही नहीं है, क्या सरकारी बाथरूम में जाते हैं क्या? देखो ना आपको Like a web over the town, these hoses carry water from the glaciers above to the center. Almost nobody we meet here is originally from this place. Most have come from other regions of Peru with the dream of finding wealth through mining. अच्छा। आगे ना वही वाली बात कि यहाँ पर अमीर बनने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ आए। The gold prices multiplied 6-fold between 2001 and 2012 and led to a population boom in the area. However, the conditions are extremely harsh for the 50,000 people living here.
इतनी खतरनाक जगह पे 50,000 लोग रह रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। There's been no effort to develop infrastructure suitable for the growing population. Every day, thousands of people throw their garbage on streets indistinguishable from dumping sites. अब क्या है भैया कि वो जो जगह ऐसी है कि वहाँ कचरा फेंकने का कोई इंतजाम भी नहीं है। अब मुस्लिम आदमी करेगा तो करेगा क्या, सड़क पे कचरा फेंकेगा वो तो भैया है। सही है। There are no services from the government to pick up this trash. People are on their own. The most terrifying problem is the lack of a sewage system. Wastewater flows. अबे अब देखो ये ना यहाँ पर नाली का कोई सिस्टम नहीं है। अगर जब नाली ही नहीं तो मैं समझता हूँ कि सड़कों पर जो नाली का जो पानी है सड़कों पर बेके आ जाता होगा। Openly through the streets as it is. This soccer field does not consist of real grass. It's all artificial because trees and other plants cannot survive at this altitude. और बाबा इतनी ऊंचाई है कि यहाँ पर पेड़ पौधे तक नहीं उगते हैं यार। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि सब्जी वगैरह और ये सब कैसे उगाते होंगे और ये लोग खाते क्या होंगे फिर? यार ये तो यार समझने को और कैसे हमलाते होंगे ये तो महत्व ये चीज का। हाँ, क्योंकि खाना तो जरूरी है, तो कुछ तो इंतजाम करते होंगे। वो कैसे इंतजाम होता होगा, कैसे आती होगी? The town is located around the mountain called La Bella Durmiente, meaning sleeping beauty. Can you see here the face and the body? It's a lady. She's sleeping. The shape of the mountain. अबे ऐसा नहीं तो कोई और लड़ी जैसे कोई यार देख लो क्या जभी तो उसका नाम स्लीपिंग ब्यूटी है। The town blends into the sky with its chaotic gray structures. Every morning, workers walk for kilometers uphill to reach the mines. Filled with dangerous gases, the working conditions inside these tunnels are extremely tough. La Rinconada is also called the Devil's Paradise. ओह, यहाँ काम करना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना भैया। क्या है कि एक तो आकाशी में पहले काम है ऐसे गोवा में आ जाओ काम वगैरह होते मैं दम तोड़ देगा ना मेरे भाई। This is because it's a town ruled by illegal companies that control the mines. There are signs near the tunnels that order to shoot those who enter without permission. No matter the warnings, we are determined to get inside these mining tunnels. I will try to see how they work. Our friends, they said, probably we can get very close. वहाँ पे क्या है अपराधी गेंग का नाम जो है मतलब क्या है अपराधी गैंग। हर किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है, गोली मार देंगे नहीं तो। Can you see the lady there? The lady? Yeah, she's a lady up there. They collect the leftovers. Yes. Women are forbidden to work in the mines. According to local beliefs, the sleeping beauty becomes jealous and brings disasters like earthquakes if a woman touches its gold. They earn their living by searching for gold. ये तो मेरा मानना है कि ये तो बात जो है अंधविश्वास है तो भैया यार। औरतों को भी काम करने दो, उनको भी सोना कमाने दो। हाँ यार। Gold and waste rocks thrown outside the mines. Children searching for gold on the mountain can be easily identified by the frostbite marks on their cheeks. Being foreigners with cameras, we attract a lot of attention. After this point, I handed Marco my phone to capture footage inside the tunnels. These figures near the mining site, decorated with dried flowers, fruits, and alcohol bottles, represent mountain gods. पहाड़ी देवता मुझे तो बहुत डरावने दिख रहा। Workers come here to pray for protection from accidents and success in finding gold. ये भी होना चाहिए तो भैया कि पहले प्रार्थना करेंगे उसके बाद उन्हें जाएंगे। Incidents such as explosions, roof collapses, and gas poisoning occur about 25 times more often compared to advanced countries. If a mine worker dies, a company pays approximately $600 as compensation. The concept of a regular salary doesn't exist in La Rinconada. Miners work under an outdated इससे तो ये देखो भैया कि जो वर्कर वहाँ काम करते हैं ये हिसाब से अगर देखा जाए उनकी स्थिति आगे वही खराब है। An illegal labor system called cachorreo. They work for the company without pay for the whole month and then get one day to work only for themselves, taking home the gold they find as their salary on that day. Depending on the success of the cachorreo day, they may earn a significant amount or even end up working for free. ये तो एक तरह से जुए की तरह होगी। हाँ, अब जिसकी किस्मत चमकेगा जिसका उसपे बहुत सोना मिलेगा तो उसका अमीर हो गया होगा। अब जिसको कुछ नहीं मिला उसको कुछ मिलना नहीं उल्टे तो पकड़ में लटक गया वो। ये यार बोला ये जुआ है तेरे का यार। So their income is theoretically determined by luck. However, the miners try to minimize this uncertainty by sometimes pocketing good-looking stones or hiding them in some secret spot for the cachorreo day. ये अच्छी बात है कि वो सारा अंटी कर लेते हैं। तो वो भी जरूरी है। वो तो कमाने आए कि गंवाने आए। My oxygen level is now at
65%, way below the normal 95 to 100%. So I breathe super fast. My heart rate is like over 120, while it should be between 80 to 100. Right now, a local is checking his oxygen level. His results are way better than mine. 82% oxygen. देखो आप वहाँ के लोगों का नॉर्मल आ रहा और इसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है. And a pulse of 97. I can no longer stand. I'm going back to the hotel to get some oxygen. अरे भैया तुम तो आराम कर लो. ये फैसला तो बहुत अच्छा करा साहब. हाँ. क्योंकि आप जान है तो जान है और जब जान ही नहीं तो जान को क्या करोगे यार. ये वीडियो सब जाएगी चूल्हे की भाड़ में. अपनी सेहत का ध्यान दो भैया पहले. I'm keeping my coat on to stay warm as there's no heat. Now we're gonna wait a few hours to explore the city's dangerous nightlife and talk with some mine workers. While I'm resting, you should know the true cost of the gold. Each ring containing 8 grams of gold generates approximately 20 tons of waste during production. अब 20 टन कचरा तैयार होता है बोलो यार. खाली 8 ग्राम करने के लिए 20 टन कचरा इकट्ठा होता है. At the top of the mountain, an acid mine lake was formed because of the rocks which are extracted with gold. These rocks high in iron sulfate undergo oxidation when they come into contact with water and air, resulting in this deep red color. कितनी खतरनाक झील लगा रही है नजर आ रही है और अगर कोई डुबकी लगा ले तो वो तो बीमारी हो जाए. People living by the stream grow their crops and raise their animals with water contaminated by mercury and cyanide. अच्छा अच्छा. यार ये दूषित पानी से का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसी खेती को कर रहे हैं. अब ये दूषित उसे दूषित चीज जो पैदा हो रही है तो वो ये दूषित होंगे कि नहीं होंगे यार. होंगे जरूर होंगे. ऐसे तो बीमारी फैलना भी है. The average lifespan of the locals living here is only 35 years. खाली 35 साल की उम्र खाली उनकी यार बोलो यार. इतनी जहरीली चीजें खाएंगे तो उम्र तो कम रहेगी ना उनकी. But chemicals aren't the only reason. At this altitude, each breath contains about 50% less oxygen compared to sea level. Therefore, the blood of a Larinkanada resident is twice as dense as that of an average person. वहाँ का सिर्फ केमिकल भी जिम्मेदार नहीं है, वहाँ का वातावरण भी जिम्मेदार है. Leading to potential blockages in blood vessels and fatal outcomes. After a tough day, miners are rushing to the town center. Electricity is only available on a few streets here, leaving the rest of the town in darkness. यार बाकी एक बात भी समझ में नहीं है कि सोने से निन्यानवे तकलीफें मौजूद है यहाँ. लेकिन वो तकलीफें झेलने के बाद सिर्फ सोने के लिए लोग जाए. All the mine workers are here. They're shopping and socializing between each other. Stalls and little shops all around, selling everything. Street food, clothes, household stuff, you name it. Kids are playing outside with endless energy until late at night. Oh, los argentinos. अब ये क्या है, अब देख रही है बच्चे. अब इनके माँ बाप जो है वो आवाज हो गई. आप देख इनको बच्चों को खेलेंगे भैया यार. ये माँ बाप तो ठीक है चाचा, मगर ये बच्चे भी तो खुद भी तो काम करते हैं. बोलो यार. How old is he? 12. Is there only primary or also secondary school? Yes, there is. How big is the school? Not very big. Is there higher education? No, there is not. या भैया मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शिक्षा में कोई चीज ही नहीं भैया. एक आध स्कूल है वो भी छोटा मोटा है. कॉलेज तो यहाँ है. इसी जगह पे कॉलेज का तो होगा मेरे भैया. जगह ऐसी खतरनाक है. After that, you need to move to Puno or Juliaca to study. What if they don't move? Do they start working in the mine? Yes. तो बच्चे जो है ना यहाँ पढ़ते नहीं है, थोड़े बड़े होते हैं और वो खदानों में लग जाते हैं काम. As you see, people come here to exchange their gold pieces for souls. We are in an exchange office now. To keep out the robbers and attacks, they've placed iron bars in front of the counter. Now we're gonna see how they convert gold. Let me catch my breath, man. The ore you see is the result of a worker's hard labor spent throughout the month. Right now, the gold is in an amalgam with mercury, and heat treatment will be applied with a blowtorch to separate the two metals. For every gram of gold, about 2 grams of mercury evaporate and mix into the atmosphere. What is the hardest part of doing this job? Transporting the material. पैसे का एक चीज अपने कई बार देखा. सोने का एक चीज अपन आज पहली बार देख रहे हैं. महीन के महीन सोना उसने पिघला के
अलग कर लिया उन्होंने. Because remember, there are many bad people or robbers, and it's not really safe to transport. हाँ भाई बात सही है. अगर सुना इधर से उधर जाए तो कोई अटैक कर सकता है. सही है, वो तो कोई भी लालची जो इंसान है वो तो. What does she like about La Rinconada? Mostly there's nothing good because, as you can see, everywhere is contaminated. Well, you can earn a good income. मैडम मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप जो है ये सुधर के लिए यहाँ पर को अच्छी जिंदगी के लिए आते हैं यहाँ से चले जाओ तो आपके लिए Above the national average. That's why people come here. Different herbal tea mixtures are also consumed to reduce symptoms like headaches and fatigue. We call emoliente. What is this made of? चाचा अगर वहाँ जाओगे ना तो आप चाय के तो बहुत शौकीन हो, मगर वहाँ ये वाली चाय मिलेगी, वो वाली अपनन वाली नहीं मिलेगी. अच्छा भैया ये वहाँ का वातावरण के ही हिसाब पी से लोगे वहाँ जो वातावरण वहाँ है उसके ही हिसाब से जो चीजें हैं वो आपको लेना है. Water, different herbs, and syrup. It's really good. Try a little bit. It's heavy. It's too hard to drink. We can't. चाचा ये मैंने किया था ना, ये तुम्हारे बस की चाय नहीं दिख रही है, देख लो लेके देख लो. मैंने उन्होंने रिजल्ट कर दिया. हाँ इसलिए मैंने पहले ही तुमसे किया. Go more far. To there is no more electricity, no more lights, and it's better to stop here. Most बहुत खतरे की जगह है ये तो यार. miners spend their hard-earned money on alcohol and nightlife on these streets. If the living and working conditions do not kill a person, then a knife or AIDS does. Nightclubs are the most dangerous spots in La Rinconada. अरे बाप रे बाप. लड़की के अय्याशी के साधन दिख रहा है मेरे को तो. मेरे को ऐसे लग रहा है भैया यार. ये लगता है हम वेजिटेरियन बहुत शांति से पनप रही है. In this street there are bars, nightclubs, and some companionship options for mine workers. We are at the center of human trafficking, robbery, and murder in La Rinconada. यहाँ तो वो काम है भैया का काम पे जाओ क्या घर से निकलो घर में छिप जाओ भैया. If you look there, you can see the lady. There are many people trying to buy a rose for the ladies here. अरे मेरे भैया यहाँ पे ये गुलाब के चक्कर में मत पड़ो, सीधा घर जाओ. ये जो घर पे तुम्हारी मेरे बेटी उसके लिए फूल ले जाओ, चक्कर में मानो एक पपी तुमको जला देगी वो. According to Puno police, approximately 2,500 underage girls are being exploited in these places we just walked by. The town has only one police station, and the Peruvian government isn't putting in any effort to combat these crimes. मेरे को तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नजर आ रही है मेरे को. क्या जमाने की बुराइयां हो रही है, इसको बस सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही. तो सोच के मैं बड़ा ताज्जुब हो रहा है मेरे को यार. बताओ. Is there a jail here? No. We call Calabozo. There is like a place, a very small place. There is no hospital in the city, right? There is a tiny, very tiny clinic. यार जिला कोई बड़ी चीज मिलने के लिए नहीं हो रही है. स्कूल है तो छोटा, जेल है तो छोटी, थाना है तो छोटा, अस्पताल है तो छोटा. तो आगे तो जिला बड़ी चीज क्या मिलेगी ये तो बता भैया. अय्याशी के अड्डे मिलेंगे बड़े बड़े वहाँ बस. हाँ जो जरूर चीजें वो तो छोटी छोटी. तो वो चीज बड़ी बड़ी मिलेगी ना. Maybe 2, 3, 4 rooms max. We're now meeting with a miner who has spent 12 years working in La Rinconada. He also owns the only gym in the town. After a day of intense physical labor, miners continue sweating out. Ramiro is one of the few lucky miners. What is the largest amount of gold ore you ever found in grams? 200 grams. Oh wow! He found 800 grams in one piece. It's a lot of gold. बहुत अच्छा काम कर रहा हो सर, और लोगों को एक्सरसाइज करने की प्रेरणा दे रहा हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो. यार ये मुझे लगता है कि जिसको दूसरे को जो सोना मिला है, उसी के कमरे से नहीं तुम्हारा खुल जाएंगे. हाँ. Are you married? Yes, we have 3 children. They're in university. Do you advise your children to work in the mines? No, because it is very, very dangerous. They rob when the miners collect gold. How does elevation affect your body? Even though I'm from Puno, I have that problem. Puno is at 3,800 meters above sea level. So coming here at 5,000 meters above sea level, it starts to be challenging. Digestive issues at first, 3 days of suffering. भैया बोल दो कहने का ये कि अगर आप इस जगह आते हो,
आपको निरंतर 3 दिन बिल्कुल आराम ही करना है, उससे पहले बाहर ही निकलना है। कि 3 दिन आराम पूरा हो तो आप काम कर सकते हैं। How much money do mine workers make? Sometimes it goes up, down, down and up. One would earn more or less around 2,000 Peruvian soles and a little more. चाचा, मुझे ऐसा लगता है कि सोने का रेट कम ज्यादा होता है ना, तो उसके हिसाब से इनकी कमाई होती होगी। Your hands are so affected by working in the mines. I accidentally hit myself with a rock while trying to separate the mineral from the gold. So you're using a stone to crush, and then suddenly, bam, injuries, 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 especially on this side when you're crushing. Are there any passed away mine workers? It's quite constant. The mine, many say, is for strong men. They don't mean strength in muscle size. Primarily, it's more about mental strength, about resilience, about mastering considering the altitude. Yeah, ये बात तो सही है मेरा भाई। कि यहाँ पे काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है भैया यार। खाली हाथ पैरों की शक्ति नहीं लगती है, दिमाग का भी बहुत काम होता है। जगह ऐसी है भैया यार। हाँ। It's not so simple. We're 5,000 meters above sea level. Although the dream of coming to La Rinconada and finding a large gold ore may seem attractive from the outside, most miners and their families never achieve the financial comfort they desire. The Peruvian government has been silent for years about the illegal operations in gold mines and the abuse of workers. Despite all these, ये सरकार चुप है। मैं ये समझता हूँ अगर सच में अगर दिक्कत का कोई कारण है तो यही। सरकार को जो है ना कुछ नियम बनाना चाहिए और इन लोगों को उसके हिसाब से चलाना चाहिए। Conditions, people continue to seek the opportunity of a better life in the world's highest settlement. Thanks for watching. Don't forget to subscribe so you don't miss new documentaries. See you in the next video. Ruhi Chenet was here. वाह भैया वाह। वाह रे भैया वाह, क्या जगह बताई है तूने यार। ये क्या अंतरिक्ष कुछ ही दूरी पर और जमीन से 5,000 मीटर ऊपर, तो कितनी ऊंचाई होना चाहिए। और ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन आधे से भी कम हो गया हो, और ऐसी जगह पे जो ये गुजराती जो निज़ाम है कि ये पहाड़ी और ये वाकई में यार जो चारे पे गुजरात के चाचा, मुझे एक बात मन में खटक रही है। हाँ, क्या? तुम तो इस जगह पे चल सकते हो आराम से। अब मैं जैसा माहौल है बर्फ के हिसाब से, मैं तो नंगे पैर रहता हूँ। मतलब मैं तो वहाँ चल नहीं पाऊंगा, और वाकर से भी चलूंगा तो वाकर अगर अंदर धंस गई तो फिर मुझे उठाने वाला। मेरे बेटे मुझे ये बता, तू मरेगा करेगा क्या? हाँ, ये बात भी सही है। मरेगा तो करेगा क्या? हाँ, क्या वहाँ पे तू मरने जाएगा क्या? नहीं, जाने ही नहीं। हाथ पर धरने सबको उनकी हालत खराब हो रही है, और ऐसी अरे जब वो मतलब अच्छे भले होके ऐसी हालत हो रही है उनकी, तो हो जाएगा, मर जाएगा। अरे वहाँ जाना तो दूर, गाड़ी में ही मेरे वहाँ की सिटी में घुसते से ही मेरा काम लग जाए। कुल मिला के वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत मनोरंजन थी, और जिसने भी वीडियो बनाई उसने बहुत लाजवाब वीडियो मेहनत से बनाई थी, उसकी भी तारीफ करेंगे अपन। तारीफ भी करेंगे, लेकिन ये सबसे बात तो ये है, ऐसी जगह पे बंदा गया है, तकलीफ भी उठाई और वहाँ की पूरी जानकारी उन्हें दी कि कहाँ क्या है, वहाँ के हालात क्या है, वहाँ की जिंदगी क्या है, वहाँ का पानी क्या है, वहाँ का खान पान की क्या है, सारा उन्हें जायजा लिया। और ऐसी जगह वो हर किसी को थोड़ी, मैं तो उसको एक दिन मतलब ये है कि बीमार या ऐसा मरीज या कमजोर दिल वाला ऐसे लोग नहीं जा सकते ना, मजबूत और जो ऑक्सीजन मतलब इंतजाम करके ले जाने वाला जा सकता है वहाँ पर। मेरी बात सुन, आम पब्लिक या आम नागरिक ऐसी जगह हो जाएगा नहीं।
क्योंकि उनको मरना नहीं है। जो लोग वहाँ गए हैं और जो लोग वहाँ जा रहे हैं सिर्फ इतना खाली उनको सोने का लालच है। जरा से सोने के पीछे अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे। जबकि वो मोबाइल ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, क्या ना ठहरने का ठिकाना, किसी चीज का कोई नहीं। जान की जख्म अगर खिदमत हुई तो बच के आ गए, नहीं तो सही। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जरा से लालच के चक्कर में जान को जोखिम में मत डालो, अपने परिवार के साथ यहीं रहो। मेरी राय में तो वो अच्छा है, घर बार और अपने बीवी बच्चों के साथ रहो तो वो खुशहाल जिंदगी है। वहाँ जाके करोगे बहुत दुनिया में बहुत गम है। ये हालत देख के मुझे घना याद आ गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम उतना गम है, लोगों का गम के समझा, मेरा गम कितना। तेरे गम के आगे तो मेरा गम कुछ भी नहीं है। वाह, तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे और फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।